Alright, beta. After the neurosyphilis, here I have few more CNS infections. One is the neuroborreliosis. We'll try to cover the infections as much as we can. It's too much, I know, beta, but we have to do it anyways. Neuroborreliosis, what we call the Lyme disease. The underlying causative agent is a suffragette bacteria, that is the Borrelia burgdorferi, right? Transmitted by the Axodes ticks जो होते हैं इसको ट्रांसमिट करते हैं, वो कैरी करते हैं अपने अंदर ये बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी is the causative agent responsible for a very not really good but very harmful. It can be the CNS infection named the Lyme disease or neuroborreliosis. If you once you develop this infection of your CNS, the patient comes to you with the neurological symptoms because it involves the meninges. So you come with aseptic meningitis. Not only this, but there is the involvement of very important cranial nerve, that is the facial nerve. So there is the facial nerve palsy. Other neurological symptoms include the polyneuropathies. There's some problem with the neurons plus the encephalopathy, the problem with the pathology in the brain substance. Okay. In rare cases, there is the focal proliferation of the microglial cells, plus there is the scattered extracellular organism. The Borrelia burgdorferi is present outside the neurons, that is the extracellularly, around which there is the focal proliferation of the microglial cells. I don't think there is anything difficult to learn in this couple of paragraphs. You need to remember the underlying microorganism, that is the spharochete, that is Borrelia burgdorferi. Ticks होते हैं जो इनको ट्रांसमिट करते हैं, meninges इन्वॉल्व होती हैं. सो यू कम अप विद द एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, वही मेनिंजियल इरिटेशन होगी, हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस होगी. और ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ द फेशियल नर्व. ठीक है बेटा. सो दिस इज़ व्हाट ऑल कैन हैपन इन दिस. Then right after that comes the meningoencephalitis, but viral meningoencephalitis. It is the infection of the meninges and brain substance, and it is all viral. It is the parenchymal infection of the brain associated with the meningeal inflammation, and sometimes there is the involvement of the spinal cord as well. तो फिर उसको हम encephalomyelitis कहते हैं. मैं बताना ये जा रहा हूँ बेटा आपको कि देखें, one is the meninges, one is the brain substance, one is the spinal cord. Okay. In viral meningoencephalitis, there has to be the inflammation of the brain, but with the inflammation of the brain, most of the times there is the inflammation of the meninges. So in combination, it is said to be meningoencephalitis. But sometimes what happens, the brain inflammation is associated with inflammation of spinal cord. In that case, it is said to be the encephalomyelitis. Okay, so if it is brain with meninges, meningoencephalitis, brain and spinal cord, encephalomyelitis. Look, brain का infection है, most of the time associated with the meningeal inflammation, so that is said to be the meningoencephalitis. And sometimes with the involvement of the spinal cord, in that case it will be called as obviously the encephalomyelitis. The viruses actually कौन से होते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन the viruses which infect, they actually infect what cells? They may infect the specific cell type, or they may infect the particular area of the brain. If the virus enters, and if the virus has to infect any particular cell, then it will go to the oligodendrocytes. और ये भी हो सकता है कि किसी खास सेल को अफेक्ट ना करें, किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन को अफेक्ट करें, तो दैट विल बी द मीडियल टेम्पोरल लॉब्स और द लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, इस तरीके से. या there may be the herpes zoster virus, or maybe the complication or the manifestation of the progressive multiple leukoencephalopathy. Viral meningoencephalitis is a slowly progressive degenerative disease syndrome. It may follow after many years of viral illness. An example is the post-encephalitis Parkinsonism. You understand what I'm trying to say? The viral meningoencephalitis
It's not kind of early manifestation. It is very slowly progressive degenerative disease syndrome, और ये directly नहीं होती. It may follow after many years of the viral illness. You develop any viral illness in your body, in your brain, anywhere. After so many years, if you keep this untreated, the virus, somehow remains in your body in the latency, and after so many years, it will reactivate and will affect your meninges and the brain substance and will produce the meningoencephalitis as easy as possible. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि दो चीज़ें आपको अगर इसमें याद रखनी है तो आप जो है याद रखेंगे सेल टाइप कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ब्रेन एरियाज अफेक्ट होते हैं. दैट्स इट, इट्स ईजी. एंड देन आफ्टर दिस कम्स हियर, let me describe it better. So now some kind of arthropod borne viral encephalitis. So there is encephalitis, that is the inflammation, the infection of the brain substance, and it is due to the virus, but the virus is arthropod borne virus carried by any arthropod. Arthropod borne viruses को हम arboviruses कहते हैं obviously, and they are an important cause of epidemic encephalitis. और उसकी काफ़ी ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी रेट होता है, क्योंकि अगर कोई आर्थ्रोपोड खास करके मॉस्किटोज़ वो कैरी करते हैं वायरस को, और वो मॉस्किटोज़ किसी इलाके में बहुत ज़्यादा हैं, तो दैट मॉस्किटो बाइट 1%, another person, thousands of people are infected with that virus due to the mosquito bite. Arthropod-borne viral encephalitis, obviously this is the inflammation, infection of the brain substance, so there has to be the generalized neurological deficit because of the involvement of the brain substance. There will be the seizures, confusion, delirium, stupor, coma, and ultimately, if kept unnoticed or untreated, then coma may eventually end up with the death. And arthropod-borne viral encephalitis, mostly it involves the brain substance, but there may be involvement of the spinal cord as well. खास करके वेस्ट नाइल encephalitis में उसकी काफ़ी पोलियो जैसी प्रेजेंटेशन होती है, पैरालिसिस होती है एंड एवरीथिंग. सो या वेस्ट नाइल, लेकिन याद रखिए वेस्ट नाइल encephalitis. वेस्ट नाइल encephalitis भी एक आर्थ्रोपोड बोन encephalitis ही है, लेकिन उसमें encephalitis के साथ ब्रेन सब्सटेंस के साथ नीचे spinal cord भी इन्वॉल्व होती है. CSF findings in case of arthropod borne viral encephalitis, CSF will be colorless as usual. Slightly elevated pressure, protein levels high because of infection, inflammation, glucose has to be normal. क्योंकि ये वायरस है, बैक्टीरिया होता तो ग्लूकोज कम होता है, क्योंकि बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं ग्लूकोज को. इनिशियली जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बाद में लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं. ठीक बच्चों, इस तरीके से. Then after this, we talk about the morphology of the arthropod-borne viral encephalitis. Then obviously the virus, look what happens is beta, if let's suppose this is the mosquito, and this mosquito, how unusual this is. This mosquito carrying the virus, right? If this, just a second, is the mosquito carrying the virus, right? And if he somehow bites you and releases the virus inside you, this virus will obviously involve the brain and you will come up with the symptoms we discussed previously. There will be actually the meningoencephalitis. Early on तो neutrophils होते हैं, बाद में lymphocytes आते हैं. ठीक है. So if we talk about the brain particularly, there will be the multiple foci of the necrosis of the gray matter and the white matter. Particularly, there is a single cell neuronal necrosis with phagocytosis of the debris called the neuronophagia. So if you see, this is the brain substance, this is the brain substance, cerebrum of both the sides. Then you will see that like gray matter and white matter substances, there is the focal necrosis of the gray matter and the white matter. It's really interesting. और gray matter और white matter की जो इन्फेक्शन होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसके अंदर भी पर्टिकुलरली क्या लॉस हो रहा है बेटा? जाहिर सी बात है, न्यूरॉन्स ही होते हैं जिनका डैमेज हो रहा होता है, और जो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं दे आर लेटर रिमूव्ड. They are phagocytosed by the microglial cells, and that is called the neuronophagia. So they are the two cerebral hemispheres
there are the multiple foci of the necrosis. The one focus of necrosis right over here, another focus of the necrosis, and there are multiple focuses of the necrosis. और इसके अंदर आप अगर देखो तो क्या हो रहा है अंदर, जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं ना, न्यूरॉन्स का लॉस हो रहा है. वंस दीज न्यूरॉन्स आर डैमेज दे आर फेगोसाइटोस्ड, द डेब्रीज ऑफ द डेड न्यूरॉन्स इज रिमूव्ड, फेगोसाइटोसिस होती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोनोफेजिया, क्योंकि डेड न्यूरॉन्स आर बीइंग ईटन ना, सो दैट इज द न्यूरोनोफेजिया, राइट. देयर विल बी माइक्रोग्लायल सेल्स, वही तो फेगोसाइटोस करेंगे इन डेड न्यूरॉन्स को, ठीक है. दे एग्रीगेट अराउंड द नेक्रोसिस. सो इफ यू सी, this is the focus of necrosis. So here the microglial cells will come, they will aggregate around the necrosis, और इसको हम ये जिस तरीके से एग्रीगेट करते हैं ना ये माइक्रोग्लायल सेल्स, तो इस एग्रीगेट को हम कहते हैं माइक्रोग्लायल नोड्यूल कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोग्लायल नोड्यूल कहते हैं. So these are the multiple foci of necrosis, and around the foci of necrosis you will see the aggregated microglial cells. The aggregated microglial cells you see, the aggregated microglials you see, they are called the microglial nodules. These microglial cells are ready to phagocytose the dead neurons inside this focus of the necrosis. Okay, in severe cases there is the necrotizing vasculitis with associated focal hemorrhages. अगर severe cases हैं तो जो आसपास की blood vessels होती हैं वो भी involve होती हैं, और उनकी क्या होती है बेटा, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस होती है, ब्लड वेसल की नेक्रोसिस होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, और ये ब्लड वेसल बाद में डैमेज होने की वजह से लीकी हो जाती हैं. जब लीक करती हैं ऑब्वियसली जगह जगह पे फोकल हेमरेजेस होती हैं. Okay, and some viruses produce the intracellular inclusion bodies, not specified, but this is all about beta the arthropod borne viral infections you have to keep in your mind beta. ठीक है, इस तरीके से few microscopic morphologic features, जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो foci of necrosis are present, microglial nodules are there, neuronophagia is there, that's it. और severe cases में vasculitis. So I hope you are clear with this beta. Now we'll talk about some other viral infections, especially the herpes simplex virus. Let's talk about this. Right beta, so the CNS infection by herpes simplex virus, especially the type 1 virus above the waist. Type 1 obviously loves to produce the infections above the waist, as you know. So the encephalitis produced by herpes simplex virus 1, most commonly in the children and young adults, so it is affecting the young people, especially the children's. एंड द 10% हैव द हिस्ट्री ऑफ द प्रायर हर्पेटिक इन्फेक्शन. 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री होती है कि पहले हाँ भाई हर्पीस का इन्फेक्शन हो चुका है और अभी जो है हर्पीस ने हमारे ब्रेन को पकड़ लिया है. ऑब्वियसली बिकॉज इट्स इन्फ्लेमेशन, इट्स इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन सब्सटेंस, सो द पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू विद अल्टरेशंस इन द मूड, memory and the behavior, because the cognitive part, the cerebral cortex is involved. So there will be mood alterations, memory affect होगी, behavior, personality change होती है पेशेंट की. ठीक है. In some individuals herpes simplex virus encephalitis सब acute course ले लेती है. उसमें manifestation ज़्यादा न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस नहीं होती, कुछ इस तरीके की प्रेजेंटेशन होती है. पेशेंट कम्स टू यू विथ वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस, लेथार्जी, एटेक्सिया, लोकोमोटर एटेक्सिया खास करके, सीजर्स. लुक द प्रेजेंटेशन इज अ लिटिल डिफरेंट. दिस इज द एक्यूट प्रेजेंटेशन, बट सम इंडिविजुअल्स कम टू यू विथ द सब एक्यूट प्रेजेंटेशन. और उसमें देखें देर इज़ नो, अगेन एक्यूट प्रेजेंटेशन देर इज़ नो वीकनेस, नो लेथार्जी, नो सीजर्स, बट इन सब एक्यूट patient complains of generalized weakness, lethargy, locomotor ataxia, seizures. Okay, and the increased incidence of this infection of the brain is observed in patients with the rare inherited loss of function mutation in the toll-like receptor 3 signaling pathway. जिन लोगों में TLR3 जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, उन लोगों में herpes simplex वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है. ऑब्वियसली तो इससे समझ आता है कि टोल लाइक रिसेप्टर्स का काफ़ी प्रोटेक्टिव रोल है. अगर ये जीन म्यूटेटेड होगा तो यू विल बी ससेप्टेबल टू डेवलप दिस इन्फेक्शन. ओके, लास्टली व्हाट अबाउट द मॉर्फोलॉजिक पिक्चर, व्हाट अबाउट द मॉर्फोलॉजी? ड्यू टू दिस म्यूटेशंस you developed this infection of the brain. Okay, agreed. But the infection of the brain, how it actually looks like, आपको presentation पता है, underlying mutation पता है, भैया लयन कैसा होता है, कहाँ पर होता है ब्रेन में? What about the sites? Inferior and medial regions of temporal lobe.
and the orbital gyrus of the frontal lobe. Temporal lobes के inferior region, medial region. Frontal lobe का orbital gyra है. Okay? ये साइट्स अफेक्टेड होती हैं. क्या वहाँ पे लेजन होता है? देयर इज अ नेक्रोसिस एंड हेमरेज इन द सीवियरली अफेक्टेड रीजन्स ऑफ द टेम्पोरल लोब एंड द फ्रंटल लोब. समझ आई बात बेटा? कॉजेटिव एजेंट कौन है? हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस. कौन से एज ग्रुप अफेक्टेड है? चिल्ड्रन और यंग एडल्ट. ठीक है. अच्छा, अंडरलाइंग म्यूटेशंस कोई है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाए? बिल्कुल, TLR रिसेप्टर जीन के अंदर म्यूटेशन. ओके. प्रेजेंटेशन एक्यूट भी हो सकती है, सब एक्यूट भी हो सकती है. जहाँ पे लेजन है ब्रेन के अंदर, वो कौन सी जगह है? टेम्पोरल लोब हो सकता है, फ्रंटल लोब हो सकता है. क्या होता है लेजन में? हेमरेज एंड नेक्रोसिस. Under microscope, what do you see? There is a perivascular presence of the inflammatory infiltrates around the blood vessels, and also there are the cowdry type A intranuclear viral inclusion bodies. Neurons के अंदर inclusion bodies मिलती हैं that are said to be the cowdry type A inclusion bodies. ठीक है. herpes simplex वायरस की कौन सी inclusion bodies होती हैं बेटा? cowdry type A intranuclear viral inclusion bodies. ठीक है. Okay. And these inclusion bodies are present in the neurons, in the glial cells. Okay, yeah. And then after the herpes simplex 1 comes a HSV2. बहुत कम होता है HSV2 का इन्फेक्शन, लेकिन अगर होता है तो वो ब्रेन सब्सटेंस को कम, वो मेनिंजीज को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, तो मेनिंजाइटिस कराता है. अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि वेस्ट से ऊपर तो HSV1 का इन्फेक्शन होता है, तो HSV2 कहाँ से आया बेटा? बर्थ केनाल से. एक बच्चा जो कि मदर के वॉम में है, तो मदर के बर्थ केनाल में तो HSV2 का इन्फेक्शन हो सकता है ना. दिस इज लेट सपोज द वॉम, जहाँ पे ये आपका बेबी ग्रो कर रहा है. ठीक है. विथ 2 ब्यूटीफुल आईज, और ये मदर की बर्थ केनाल है. ठीक है. अब वेस्ट के ऊपर HSV1 होता है, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन वेस्ट के नीचे तो HSV2 हो सकता है ना बर्थ केनाल में. ये पूरी बर्थ केनाल के अंदर मदर में HSV2 है. जब बेबी यहाँ से पास होगा तो HSV2 जो है बर्थ केनाल से, वो आपके बेबी के या मेनिंजाइटिस करा सकता है. ठीक है बेटा, इस तरीके से. सो बर्थ केनाल यू कैन सी इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन. Individuals with the active HIV infection, HSV2 may cause the acute hemorrhagic and necrotizing encephalitis. Mostly HSV2 क्या कराता है? meningitis कराता है. If you are suffering from the HIV, then it does not restrict itself to meningitis. It can cause the encephalitis, very severe encephalitis. Okay, this was all about the HSV-induced brain infection. Now, beta, after the herpes simplex virus comes the varicella zoster virus, right? Beta, so the varicella zoster virus इंड्यूस्ड CNS इन्फेक्शन. ये तो बेटा आपको पता होगा कि जो इसके 2 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली. प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो वेरिसिला से होता है, खास करके बच्चों में जो होता है, जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं. ठीक है. और इसमें CNS इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ स्किन पे लेजन्स बनते हैं विदाउट एनी न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट. बाद इसके दौरान क्या होता है, जो वायरस होता है लेटेंसी में चला जाता है, और या डोर्सल रूट या फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर लेटेंसी में चला जाता है, और फिर कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं. वो फैक्टर्स मिलने की वजह से वायरस लेटेंसी से बाहर आ जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है, खास करके एडल्ट्स में. फिर बनते हैं बेटा शिंगल्स, और वो शिंगल्स काफ़ी पेनफुल होते हैं. जो स्किन पे बनते हैं वो नर्व का जो सेम डर्माटोम होता है उसी रीजन में बनते हैं ऑब्वियसली, बट दे आर वेरी मच पेनफुल. ठीक है. Okay, in between the complications of the herpes zoster are, number 1, the involvement of the blood vessel, that is the granulomatous arthritis, and in immunosuppressed individual there is the acute encephalitis. आप इतनी देर से सोच रहे होंगे वेरिसिला जोस्टर पढ़ना है, कभी कहीं पे भी CNS इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आई. बच्चों के अंदर वेरिसिला हुआ, वेरिसिला की वजह से चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स फिर उसके बाद ये दाने सारे गायब हो गए, वायरस लेटेंसी में चला गया, रीएक्टिवेट हुआ, पेनफुल शिंगल्स बने. अरे भाई CNS इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? ड्यूरिंग दिस शिंगल्स कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं बहुत सारी. उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट इंसेफेलाइटिस. राइट. ब्रेन के अंदर शार्पली सर्कमस्क्राइब डीमाइलिनेटिंग लेजन्स बनते हैं, और बाद में उस एरिया की नेक्रोसिस हो जाती है. दिस इज ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड बेटा, नथिंग एल्स. राइट. सो आफ्टर द वेरिसिला जोस्टर, couple of words on cytomegalovirus infection. Let me discuss about this. Right, beta. Cytomegalovirus induced CNS infection, especially it occurs in the fetuses. If not,
than in immunosuppressed individuals, but not really common in immunopotent individuals. But if we follow this, then we see what is the outcome of infection in the utero. What actually happens in the CNS if you have the infection with this virus? Number one thing is in the fetus, the periventricular necrosis, the ventricles that are formed in your CNS around the ventricles, you will see there is the death of the cells, that is the periventricular necrosis, and ये necrosis काफ़ी extensive हो जाती है, and ultimately there is the severe brain destruction followed by improper brain development leading to the microcephaly, काफ़ी छोटा हेड साइज रह जाता है, एंड देयर इज द पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन. कितनी आसान सी बात है बेटा, एक बच्चा माँ के पेट में है, साइटोमेगाला वायरस का इन्फेक्शन होता है, बनता हुआ जो उसका ब्रेन है, उसके जो वेंट्रिकल्स हैं उसके अराउंड नेक्रोसिस होती है. अगर वो काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाए तो सीवियर ब्रेन डिस्ट्रक्शन होती है, और सीवियर ब्रेन डिस्ट्रक्शन की वजह से हेड प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है एम्ब्रियोलॉजिकली, तो वो छोटा सा रह जाता है, और वेंट्रिकल्स के अराउंड आफ्टर नेक्रोसिस देयर इज कैल्सिफिकेशन. ठीक है. We talk about the morphology of the lesion. You will see the cytomegalovirus infection in the immunosuppressed individuals. ये इन्फेंट्स की बात हो गई. इन immunosuppressed individual there is the subacute encephalitis. ठीक है. There is obviously inflammation of the brain substance, subacute. ठीक है. Localized in the periventricular subependymal region of the brain. बेटा, this is if let's suppose the ventricle, एपेंडाइमल सेल्स इसको लाइन करते हैं, वेंट्रिकुलर कैविटी को, ये तो आपको अच्छे से पता है. और जो इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में, इफ़ टुडे आई डेवलप द HIV एड्स, later it is possible that I will develop the cytomegalovirus infection if of the CNS, if let's suppose, then you will see there is the periventricular subependymal region. लेयन जो मौजूद होगा यहाँ पे होगा, ये आप देख रहे हो, वेंट्रिकल के अराउंड है लेयन, ये वेंट्रिकुलर कैविटी है, इसके अराउंड है लेयन, लेकिन ये एपेंडाइमल सेल्स जो है ना उनके नीचे है, सब एपेंडाइमल लेयन है. ठीक है. इन द पेरीवेंट्रिकुलर स्पेस, resulting in the severe hemorrhagic necrotizing ventriculoencephalitis and the inflammation involving the ventricles and the nearby brain substance. ठीक है बेटा. Inflammation involving the ventricles and the brain substance. Okay. So are you clear with this beta? This is whatever happening in the infant, in the developing baby, in the utero, and in the immunosuppressed individual, there is subependymal involvement of the ventricles and the inflammation involving the ventricles causing the ventriculitis, and it also extends to the brain parenchyma, the brain tissue actually, right? So yeah, any cell of the CNS can be affected. The neurons, the glial cells, the ependymal cells, or the endothelial cells. It is as simple as possible, right? So don't complicate it actually. So that was the cytomegalovirus. After that comes the poliomyelitis.